We can start. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Kirti Suta. Welcome to Facebook live session from Dr. Makkar's Diabetes and Obesity Center. So today the topic of the session is, do you have any queries on diabetes? Yes, and we are there to answer to the queries. Whether one is a newly diagnosed or a type 1 or type 2 diabetic patient, or one is the person who is taking care of a loved one who is suffering from diabetes, he or she has plenty of questions in the mind, plenty of queries regarding the management of diabetes. And to give an answer, a scientific answer to all these questions, we have Dr. Makkar with us. So welcome. Good afternoon, everyone. So today there's a twist in the session. Instead of me asking the questions, I'll take up questions from the audience. And before we have questions, I have few questions already lined up with me from our patients. So shall we start? Yeah, we can start. Why not? So first question which usually comes to a mind of a patient is, what exactly is diabetes? Very important, very basic question. So, diabetes is basically a disease which is caused by, number of different reasons, but it is characterized by increase in blood glucose levels. So, diabetes is a disease process or a syndrome, you can say, where there can be multiple causative factors and multiple organs may be involved, but the characteristic of type of any diabetes is increase in blood glucose levels. So diabetes is a disease which is characterized by increase in blood glucose levels. So usually a patient has queries regarding the signs of diabetes. So one question which came to me was कि ऐसा क्या होता है बॉडी में या बॉडी ऐसे क्या सिग्नल्स देती है कि हमें ये डाउट होता है कि हमें डायबिटीज है. Very important again. So before we go to signs and symptoms of diabetes, I think more important thing to understand is that is there only one type of diabetes, or there are just two types of diabetes, or there are many more types of diabetes. And usually you will see patient coming to you and they will ask, doctor मेरी type कौन सी है? So that is more very important. So there are four common types of diabetes that we see in clinical practice. Type 2 diabetes is the most common, accounts for more than 95 to 97% of total diabetes patients in India. Type 1 diabetes is much less common and accounts for about 1 to 3% of patients with diabetes, and usually occurs in children or young adolescents. Third common type of diabetes is the gestational diabetes. Any diabetes that is diagnosed during pregnancy is gestational diabetes, and it is very important type of diabetes because it affects young women, affects almost 12% of young women during pregnancy. Almost 12% of the pregnancies have gestational diabetes. And if the diabetes is there during pregnancy, it poses risk for two lives, one for the mother and second for the baby, and both get affected. Now, that is why it is a very important type of diabetes, but we are not discussing details of this here. Then fourth common type of diabetes is the genetic diabetes, which is again not that common, where there are certain genes which predispose one individual to become diabetic, and the degree of or severity of diabetes may vary depending on what type of genetic diabetes one has. Usually this is a diagnosis made after you have excluded type 1, type 2 and other secondary forms of diabetes, which may be actually a little more common. So the important fourth one which I would
put is the secondary diabetes, which can be, due to damage to pancreas, leading to decrease in insulin secretion. So commonly seen in patients who develop pancreatitis in their, whatever reason. Alcohol is one of the reasons for pancreatitis. Obesity is one of the reasons for pancreatitis. So pancreatitis leads to direct damage to the cells in pancreas which secrete insulin, leads to development of diabetes. Then there are other endocrine disorders which again, are rare ones. So the most important type of diabetes that we have to keep in mind is type 2, type 1, and gestational diabetes. If it is not there, we have to look for other causes of diabetes. Now comes the question of symptoms and signs. So symptoms and signs of diabetes are very prominent and common in type 1 diabetes. Because type 1 diabetes, we have discussed in earlier discussions also, is caused by damage to the insulin secreting beta cells in pancreas. This damage may be caused by some viral infection or viral infection leading to autoimmunity, leading to beta cell damage, causing acute deficiency of insulin. So patient suddenly develops hyperglycemia or high levels of glucose. When the glucose levels go up, there is a, okay. So since insulin is not there, the glucose levels go up. Now, what does insulin do to control these glucose? So insulin is one of the important or very important anabolic hormones in body, which maintains normal body function and normal body growth. Now, insulin is the key hormone which is important for utilization of glucose as energy for various body processes or body functions. Whatever we eat gets converted to glucose and lipid. Glucose is utilized for the immediate needs for energy. Lipid gets stored for, energy storage and is utilized when there is no immediate calories available and person needs some urgent, calories. So they are mobilized from fat. Now, once there is deficiency of insulin, glucose cannot be utilized as energy. So because the glucose cannot be taken up by cells, which requires insulin effect. Now, since it is not being utilized by the cells as energy, the level of glucose starts going up in the blood. Once there is high levels of glucose in the blood, kidney cannot, handle it. So it starts filtering out glucose in the urine. As a result, there is more water also lost in the urine. So there is dehydration which happens. Second thing is, since the energy is not getting utilized, the glucose is not utilized as energy, the brain gets signal that we are starving because we are not getting energy, right? So brain senses that there is acute deficit of energy, so we have to do something. So brain activates the pathways which lead to symptoms. So there is one side, there is dehydration leads to thirst. There is increased glucose excretion in urine. So there is increased urine excretion. Since the calories are not utilized, there is weight loss. And since the brain is getting signal that we are not getting energy, brain down the stream gives signal that we have to eat because we are not getting energy. So there is increased hunger, increased thirst, increased urination, and still weight loss. Despite increased appetite, increased food intake, there is weight loss. But these symptoms are present classically in type 1 diabetes. Type 2 diabetes, which has much more gradual onset and less insulin deficiency and more insulin resistance, these symptoms are usually absent. So majority of the patients with diabetes will have either an accidental diagnosis of diabetes during some other checkup or during routine health check. They rarely come with the symptoms of type 2 diabetes. That is why a routine screening is very important to find out individuals who have type 2 diabetes.
Gestational diabetes again is similar to type 2 diabetes and is picked up during routine screening during pregnancy. Other types we will not get into detail because you have to identify specific symptoms, so patient may not be able to do it. It is more for doctors to decide. सर अगर मैं आपसे सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स में पूछूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बॉडी में एबनॉर्मल लगे पेशेंट को तो उसे अपनी शुगर्स चेक करनी है, तो वो आप क्या बताएंगे? अगर उसको प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, अगर उसको यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है, खास तौर पे रात को उठना पड़ता है, या उसका जो यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई चेंज है, नॉर्मली रात को एक बार ही उठता है, 3 बार उठना पड़ता है, या नहीं उठता है उठना पड़ता है, या फ्रीक्वेंट जाना पड़ता है यूरिनेशन, खाना ज्यादा खा रहा है उसके बाद भी वेट लॉस हो रहा है, थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, टायर्डनेस बहुत है बिकॉज एनर्जी नहीं है, ठीक है, वेट लॉस हो रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है, ये सब सिम्टम्स इंडिकेटेड करते हैं कि आपको डायबिटीज जरूर चेक करनी चाहिए। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, पेशेंट ने बोला है कि मेरी फास्टिंग हमेशा 100 से ज्यादा रहती है, लेकिन डे टाइम शुगर्स मेरी सारी नॉर्मल रहती हैं, रफली लेस देन 100 रहती हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये एक्चुअली डायबिटीज के जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज होती हैं उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इंसुलिन सिक्रीशन और एक इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस एट द लेवल ऑफ लिवर का फंक्शन होता है कि जब आप खाना नहीं खा रहे हैं, जैसे रात को आपने खाना खाया, पूरी रात आप फास्टिंग, रात को सो रहे हैं, उस टाइम आपको खाना तो नहीं मिल रहा है, बट वट एवर calories you have still using those calories for metabolic processes or body repair during which happens during night. So glucose levels will tend to go low because energy is getting utilized. So what does liver do is liver will keep producing glucose to make sure that the normal blood glucose levels are maintained. Now once you get up in the morning, start eating, the glucose production starts going low or normalized. Right now, somebody who has significant component of liver hepatic insulin resistance, fasting sugar level ज़्यादा होगा। दूसरा component होता है इंसुलिन डेफिशिएंसी। इंसुलिन जब जैसे ही आप खाना खाते हैं उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन सिक्रीट होता है जो उस खाने के बाद की शुगर को कम कर देता है। सपोज अभी इंसुलिन डेफिशिएंसी आपकी ज़्यादा नहीं है बट हेपेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपका फास्टिंग तो ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो सप्रेस नहीं हो रहा सुबह उठने के बाद, और क्योंकि आपका इंसुलिन सिक्रीशन ठीक है तो अब खाने के बाद वाला आपका लो हो जाए, और ये नॉर्मल हो सकता है बिना दवाई के भी। अब दवाइयों के साथ भी ये सिचुएशन कई बार आती है तो हमें वो दवाइयाँ अकॉर्डिंगली चेंज। The question which has been put up is, can my diabetes be cured? So as of now, we do not have any cure for diabetes. Type 2 diabetes, we have data that we can, have remission of type 2 diabetes. We have a lot of data from bariatric surgery showing that there can be remission of diabetes. These procedures of bariatric surgery may be significant, leading to significant malabsorption and significant weight loss, leading to remission of diabetes. There are studies with medical management and lifestyle intervention showing remission of diabetes. So all these things are there, but there is no cure because we know that there is strong genetic predisposition. In due course of time, diabetes will come back even after these patients go into remission. So as of now, we don't have any cure for diabetes. Another very important question which has come is, what should be the daily routine of a diabetic? Anybody's normal routine, normal healthy routine, that you should exercise daily, you should eat in moderation, you should eat on time, avoid foods which are high on carbs, high on fat, and have a good, appropriate sleep pattern. These are the things that you need to improve.
So today the questions are not related to each other. The next question is how often the sugars should be checked in a diabetes patient? So again, depends on the type of diabetes. There are patients who are on, simple drugs which do not cause the risk of low sugars. They may be checking maybe once or twice a week, depending on what is the stage of glucose. Now, second thing is even those patients who are, not on drugs which can cause low sugar levels or hypoglycemia, if their sugars are not controlled, they have to check frequently, maybe one fasting and three postprandial values, or all 7 point also at times, to give us an idea what is happening to the sugar levels overall. So it depends on what stage of diabetes we are looking at, what is the glucose level of the patient, has he got other investigations or no, is uh, the patient able to check regularly. We can tell him you check 6 times. He doesn't know how to use glucometer. We still get that challenge, or he is afraid of needle. He is not going to check. And all these things come up. But there is no single principle, that you check this many times and these points. Uh, I think it has to be customized to patient requirement. Important thing is that whatever is done, patient should be educated about it. If the patient is educated about diet, lifestyle, and um, uh, exercise interventions, then it's very easy to manage all these. So another very important question which has come to me is what difference will it make whether my sugar levels are 120, 150 or 200? So immediately you may not get any issue, especially type 2 diabetes, because the insulin resistance is high. It is not beta cell deficiency, and the insulins may remain high for say variable period of time, leading to ongoing damage. So difference will be that initial, if you look at the trajectory of developing complications, most of type 2 diabetes patients will not develop complications over first 5 to 10 years. But after 10 years, if they have been uncontrolled, they have not been on good control of diabetes, then they will start getting complications related to kidneys, heart, eyes, uh, practically all organs of body can be affected. So I normally tell my patients कि आपने दीमक को देखा है काम, दीमक कैसे काम करती है. सो दीमक जब लकड़ी में दीमक लगती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलता कि इसमें दीमक लगी हुई है. साइलेंटली वो अंदर ही अंदर से दीमक को खोखला करती रहती है लकड़ी. जिस दिन आपको दीमक दिखनी शुरू हो जाती है, उस दिन आप अगर सफाई भी कर लें तो कुछ नहीं होगा उस दीमक को, क्योंकि लकड़ी अंदर से पूरी खाई जा चुकी है. ठीक है, और वो लकड़ी अल्टीमेटली गिरेगी. सो डायबिटीज भी आप समझ लो कि दीमक ही है. अगर बढ़ी हुई है तो ये दीमक की तरह अंदर ही अंदर डैमेज किए जा रही है आपकी बॉडी को, एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल एंड अप विद लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन. सो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप शुरू से अपना कंट्रोल करके चलें, ताकि आप कॉम्प्लिकेशंस होने से भी बच जाएं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर. So what is the hypo and how do I feel when I have a hypo? So hypoglycemia means low sugar levels. So in normal course, a normal individual, the blood sugar range usually is between 70 to 120, not even 140. So if the normal individual gets a sugar level of 74, 73, the body's regulatory mechanisms are so strong that they will not let you have extra symptoms for something that is wrong in the body. So body will try to compensate. So जब आप इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको.
एक बार आप क्वेश्चन, घबराहट हो सकती है, बहुत तेज भूख लग सकती है। सर मुझे हाइपो तो कैसे पता लगेगा कि मेरे को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है? अ, होता क्या है कि नॉर्मल इंडिविजुअल में ये रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब डायबिटीज हो जाती है तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है हायर लेवल्स पे। तो जब शुगर सडनली फॉल करती है, सडन चेंजेस होते हैं, तो देयर आर चेंजेस इन दी रेगुलेट एनर्जी मेटाबॉलिज्म और एनर्जी रेगुलेटरी पाथवेज which will give symptoms. So normal sugar up to 70, usually there is no issue. Once it starts going below 70, तो लोगों को सिम्टम्स शुरू होते हैं। यूजली सिंपैथेटिक सिम्टम्स होते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, घबराहट शुरू हो जाएगी, बहुत भूख लगनी शुरू हो जाएगी, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। ब्रेन कॉन्टिन्यूसली ग्लूकोज यूटिलाइज करता है, ब्रेन का जो एनर्जी सबस्ट्रेट है, सोर्स है, वो ग्लूकोज ही होता है। जहाँ ग्लूकोज कम होगा तो हेडेक, ब्रेन फिर एक्टिवेट होता है तो और नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, गिडीनेस, ट्रेमर्स, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। और अगर शुगर लेवल फर्दर नीचे जाता है तो इवन क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस प्रेसिपिटेट हो सकती है। somebody is driving can hit an accident, somebody is working on a machine can get injured. So it is very important कि अगर जरा सा भी आपको कोई डाउट होता है कि आपका शुगर लेवल लो हो रहा है या हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, इमीडिएटली जो भी काम कर रहे हैं उससे दूर हो जाएं। और पहला काम है शुगर चेक कर। अगर शुगर आपका 70 से नीचे है, इमीडिएटली मीठा खा लें। अगर आपका 80 पे है शुगर और आपको डाउट है कि 7 शुगर लो है, तो आप उस टाइम पे भी मीठा खा सकते हैं। अगर खाली आपको डाउट भी है कि शुगर लो होने से हो रहा है, तो आपको उस टाइम मीठा लेना है, इक्वल टू 15 to 20 grams ऑफ ग्लूकोज और कॉमन शुगर, और शुगर ड्रिंक विच प्रोवाइड्स यू अबाउट 4 spoons ऑफ शुगर। सो दैट इज हाउ यू मैनेज दिस। नाउ देर अगर आपका शुगर लेवल बार बार कम होता है, रिपीटेड हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं, तो ये जो आपके सिम्टम्स होते हैं ये होने बंद हो जाते हैं। बॉडी गेट्स यूज टू दी लो लेवल्स ऑफ ग्लूकोज, तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस कहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप शुगर लेवल्स को बैलेंस करके चलें। कंट्रोल जो होता है, ना आप उसको शुगर को लो जाने दें ना उसको हाई जाने दें, एक रेंज के अंदर मैनेज करें, सो दैट ये सब इश्यूज नहीं है। The next question is, how should my diet be? So any diabetic patient's diet is normal healthy diet. Simple. You should be eating on time, eating in moderation, and taking, consuming a variety of foods which provide you a good ratio of or healthy ratio of carbohydrates, protein, and fat. Preferably, source of food should be the natural sources. You should be eating less of processed food, more of coarse food items, like you should have grains, you should have cereals, pulses, everything is fine, but refined flour is no. The flour mixed with soya bean or chickpeas or chana, जिसको मिस्सा आटा कहते हैं हम, is better, because आपने फाइबर भी बढ़ा दिया, प्रोटीन भी बढ़ा दिया। सोयाबीन सप्लीमेंटेशन कैन बी डन। सो ये सब चीजें हैं, बट बेसिक चीज है कि एक तो आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी, खाना तीनों टाइम टाइम पे खाना है, खाना कभी मिस नहीं करना, मीठा नहीं लेना है, फ्राइड नहीं लेना है। दूसरी चीज, आपके डॉक्टर की जो सजेशंस हैं आपको कि ये कोई दवाई खाने से पहले या बाद में खानी है और उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है, वो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। The next question is, what is the importance of exercise in the management of diabetes? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। एक्सरसाइज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि टाइप 2 डायबिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, एक कंपोनेंट है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो एक्सरसाइज से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है तो जो भी इंसुलिन बॉडी में है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसका एक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि वो पहले वो काम नहीं कर रहा था इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। दूसरी चीज, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गया जिसकी वजह से शुगर बढ़ रहा था, तो हो सकता है आप जिस दवाई पे चल रहे हैं उसकी आधी डोज पे भी आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए। तीसरी चीज,
कुछ दवाइयाँ स्पेसिफिकली, सॉरी हम दवाइयों पे बाद में आते हैं। तीसरी चीज है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है। जितना आपका हार्ट रेट, अगर आप टारगेट हार्ट रेट तक जाते हैं अपना ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो उसमें आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस लेवल बेटर होता है। हार्ट की भी फिटनेस बढ़ती है, हार्ट का टॉलरेंस बढ़ती है, और सेम टाइम आपकी ब्रीदिंग भी बढ़ती है, तो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन एज इट इज इम्प्रूव होता है। जितना आपका मसल मास ज्यादा होता है, उतना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम आते जाते हैं, जितनी आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि, अच्छा, खाली डायबिटीज आप नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाता है, आपका वेट, अगर आप ओवर वेट हैं तो आप थोड़ा बहुत वेट लूज कर जाते हैं। Exercise also acts as antidepressant. It's a very strong antidepressant if used properly, and so on. So इतने इफेक्ट्स हैं एक्सरसाइज के, इतने बेनिफिट्स हैं कि सारे हम शायद डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। सर, एक और क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट आया है कि पेशेंट ने लिखा है, मेरे पाँव सूने हो जाते हैं, ऐसे लगता है मैं रेत पे चल रहा हूँ, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? सो डायबिटीज जो है, मैंने जैसे बताया था शुरू में कि प्रैक्टिकली बॉडी के सभी पार्ट्स को डैमेज करती है, और जो नर्व्स हैं हमारी, वो हमारी सेंसेशन या मसल एक्टिविटी जो है वो नर्व्स हमारी मैनेज करती हैं। एक सबसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज के साथ, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज, और जो कि हमारे अर्ली होती है इंडिया में, वो होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। दैट मीन्स नर्व्स पे जो डैमेज हो जाता है। अब वो डायबिटीज उन नर्व्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है जिनकी लेंथ ज्यादा होती है। सो पैरों की नर्व सबसे पहले इफेक्ट होती है। इस सिचुएशन में जब न्यूरोपैथी होती है तो सेंसेशन जो हैं जिस एरिया में आपकी वो नर्व फाइबर्स हैं, वो एबनॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो सेंसेशन एबनॉर्मल होते हैं, तो कभी इनिशियल फेज में पेशेंट को ये लग सकता है बर्निंग हो रही है, सुइयां चुभ रही हैं, गर्म लग रहा है, या ऐसे लग रहा है गद्दे पे बैठ खड़े हुए हैं या पत्थर पे खड़े हुए हैं। तो ये सब फैक्टर्स फील हो सकते हैं, और इसके लिए इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट मॉडिफाई कराना चाहिए जो भी चल रहा है। सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइज के रेफरेंस में कि रिसेंटली मुझे कुछ दिनों से धुंधला दिखना शुरू हो रहा है और मेरी 15 to 20 इयर्स ओल्ड डायबिटीज है, वो क्या एक रीजन हो सकता है? अगर शुगर धुंधला, एक तो डायबिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज और पॉसिबली द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंड। कैटरेक्ट जल्दी होता है डायबिटीज पेशेंट्स में, कैटरेक्ट फॉर्मेशन जल्दी होती है, उसकी वजह से धुंधला दिखाई देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब शुगर का कंट्रोल खराब होता है, तो क्योंकि लेवल शुगर के ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से लेंस के अंदर भी, आई लेंस के अंदर भी पानी भर जाना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी धुंधला दिखाई दे सकता है। तो दोनों ही फैक्टर्स को आपने ध्यान से देखना है और ये डिसाइड करना है कि आपका कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है या खाली शुगर बढ़ी हुई है, तो सबसे पहले उसको कंट्रोल कर और इमीडिएटली अपने आईज के डॉक्टर को भी दिखाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि कुछ दिनों से पेशेंट ने ये नोट करा है कि यूरिन बहुत झाग वाला होता है, तो इज इट सिग्निफिकेंट? एक फैक्टर होता है झाग का, जो होता है प्रोटीन हो सकती है यूरिन। इन एनी केस एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बेसलाइन और हर साल हर इम्पोर्टेंट पेशेंट के हर पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम और चीजें भी पिकअप कर सकते हैं। बट फ्रॉदिंग पर से कोई वरी वाली बात नहीं है, अनलेस आपका किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है या कोई और इशू। फ्रॉदिंग खाली प्रोटीन आने से नहीं होती यूरिन में, शुगर की वजह से भी कई बार फ्रॉदिंग हो सकती है, और यूजुअली अगर ज्यादा नहीं है तो उसके लिए कुछ आपको वरी करने की जरूरत है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट आया है वो ये है कि सर, व्हाई डू यू ऑलवेज से कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन डायबिटीज? ही इज अ पेशेंट ऑफ आवर्स।
स्मोकिंग जो है एक ऐसी हैबिट है जिससे आप स्मोक, एक तो स्मोक इनहेल करते हैं, स्मोक में कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। दूसरा, आप निकोटीन आपके अंदर जाती है। निकोटीन सिंपैथेटिक स्टिमुलेंट है जो आपके हार्ट बीट को बढ़ाती है और आपका जो क्या कहना चाहिए इसको, हार्ट को डायरेक्टली भी डैमेज करती है। दूसरा, स्मोकिंग से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है और वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो स्मोकिंग से होता है। तो उसकी वजह से एक तरफ आप डायबिटीज की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, दूसरी आप खाली सिर्फ इसलिए कि आपको एक शौक है स्मोक करने का, उसकी वजह से आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ाते हैं। और गलती से खुदा ना खास्ता आपको कैंसर हो गया या कुछ हो गया तो आपकी पूरी लाइफ टाइम सेविंग उड़ जाती है। या अगर पैर में आपके कोई नस ब्लॉक हो गई और आपको उसके लिए एंजियोग्राफी और प्रोसीजर कराने पड़े, या कोई पैर की टो काटने की नौबत आ गई, ये कुछ हो गया, तो ये सब चीजें उसमें पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए नर्व्स डैमेज को बड़ा लाइटली कभी नहीं लेना, सीरियसली लेना। सर अनदर क्वेश्चन जो लाइव है, what tests to be done and duration for means he just wants to know कि हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए डायबिटीज में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो आपको शुगर का ट्रैक पता होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज आपकी शुगर बड़े होने का एक मेजर फैक्टर है। और जब तक शुगर बढ़ा हुआ है ये धीरे धीरे सारी ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। तो एक रेगुलर चेकअप में वीक में एटलीस्ट हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 3-4 बार आपका चेक करते रहना चाहिए डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे, सो दैट आपको पता रहे शुगर कैसी चल रही है। दूसरा है, हर 3 महीने में एक A1C टेस्ट कराना चाहिए, जिससे आपको ये पता चलता है कि ओवरऑल 3 महीने की एवरेज शुगर कितनी चल रही है और टारगेट रेंज में है क्या नहीं। तीसरा एक फैक्टर है अब जिसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। जितनी फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है उतना हार्ट की प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ता है, उतना ही क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ता है। तो एक AGP या एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल या कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग से आप अपना वो वेरिएशंस पिक हो जाती है सर। वेरिएशंस तो पिक कर सकते हैं आप। ओवरऑल ग्लूकोज जो है कैसा चल रहा है उसको भी पिक कर सकते हैं, और अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो उसको मैनेज करना भी जरूरी होता है। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट चेंज करना होता है। इन एडिशन आपको हर साल एक रूटीन हीमोग्राम, एक रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिन, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, विटामिन बी लेवल्स जो कि कई बार कम हो जाते हैं लोगों में मेटफॉर्मिन की वजह से, विटामिन डी लेवल्स, एक बेसलाइन ECG, एक बेसलाइन इवैल्यूएशन ऑफ नर्व्स, बेसलाइन इवैल्यूएशन ऑफ सर्कुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये सब रूटीन टेस्ट आपको हर साल कराते हैं। Thank you, sir. Thanks a lot. So that's all for the day. I think we are through with all the questions. Anything you would like to add more? आई थिंक काफी चीजें हमने कवर कर ली हैं इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है जो मुझे प्रैक्टिस में देखने को मिलती है वो ये होता है कि जब पेशेंट की शुगर थोड़ी बड़ी होती है तो वो एकदम पैनिक स्टेट में आते हैं कि मेरी शुगर 300 हो गई, 350 हो गई। उसके बाद हम ट्रीट करते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। उसके बाद वो 2-2 साल, 3-3 साल वही दवाई खा रहे होते हैं और शुगर चेक करनी भी बंद कर देते हैं। और सडनली पता चलता है 4 महीने बाद या 6 महीने बाद या 8 महीने बाद जब A1C कराते हैं तो फिर 12% पे। और जब आप उसको रिव्यू करते हो तो पता चलता है जो वो सोचते हैं कि दवाई खा रहे हैं, जो लिखी हुई थी उसमें से आधी वो भी बंद हो चुके हैं धीरे धीरे विदाउट नोटिस। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि डायबिटीज के साथ आपको अपना रेगुलर हेल्थ रिव्यू करते रहना चाहिए। हर साल आपको बेसलाइन टेस्ट कराने, एक रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल मैनेज करना है, एक प्रॉपर हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना है, रेगुलर डॉक्टर को विजिट करनी है। एवरी
2 to 3 months एटलीस्ट आपको हमेशा अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। कोई दवाई हमें बीच में चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, कोई रिपोर्ट्स ऐसी तो नहीं है जो आप ओवरलुक कर रहे हैं और डॉक्टर पिकअप करके शायद आपको दवाइयों का सिस्टम चेंज करे। तो आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक रेगुलर फॉलोअप जो मेंटेन होना चाहिए, टाइम पे रेगुलर टेस्ट होने चाहिए, खुद के ब्लड शुगर रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए, और रेगुलर डॉक्टर को विजिट करते रहना चाहिए टू मेक श्योर कि आपकी डायबिटीज का कंट्रोल ठीक चले। Very aptly said, dear sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you for being with us.